अच्छा, so they're in salts that contain nitrates, NO3 minus 1 RO, NH4 plus 1 हो उसमें. P किस में होता है? P is in phosphates, ठीक है, PO4 minus 3. K is group 1, so that is plus 1. So any salt that contains these elements, ठीक है, for example, कोई भी combination बना लो, as long as it's not an acid or a base, it has to be a salt. Potassium nitrate is a fertilizer. Why? Because it's got K and also N. ठीक है, so it's got two things, K and N. इसी तरह potassium phosphate would be a fertilizer, like K3PO4, because it's got K and P. Ammonium nitrate would be a fertilizer because it's got N. Ammonium phosphate is going to be a fertilizer कि उसके अंदर N भी है और P भी है. तो most fertilizers are basically a combination of different salts, ठीक है, that contain these elements N, P and K. ये तीनों elements चाहिए plants को. So it's a combination of different salts and they must be soluble. अब इसके बारे में ना एक बड़ा frequent question आता है, that is about कि percentage of, वो पूछते हैं कि percentage निकालो NP और K की in a particular salt, ठीक है, find the percentage. So if you have a salt, for example, question है कि K, you've got KNO3 और इस KNO3 में एक से, ठीक है. अच्छा, वो पूछे कि इस KNO3 के अंदर ना what's the percentage of K, कि कितना percentage salt जो है ना वो potassium है. That's the question. So how do you find that? You find the mass of K और उसको divide कर देना total mass से, ठीक है. That's how you find the percentage of something into 100, ठीक है. कि अगर आपने percentage of K निकालना है तो the simple formula is कि find the mass of K and divide by the total mass of this thing. तो pure table में atomic mass is given है, K is 39 in the pure table, और जो total mass है ना, that is K 39 plus there's 14, that's nitrogen, plus there are 3 oxygen, so that's 16 times 3. तो pure table में ना सारी masses वगैरह given है. तो ये total mass थी compound की, this is the whole thing, 39 plus 14 plus 16 times 3, और उसके अंदर there's only 1 K. तो उसको into 100 करो, ये जरा कैलकुलेट करो क्या वैल्यू आ रही है किसी के पास कैलकुलेटर? व्हाट डू यू गेट? $101. Adjust for the denominator, and then okay, so it's 39 divided by 101, and then it ends up being 38.6%. that's a 38 point what? 38 point 6%. 6%, ठीक है. Remember to keep values up to 3 significant figures, ठीक है. Make sure you write the third number. So it's coming out to be 38.6. Round it off at the third number, ठीक है. So you're getting 38.6. That means if you've got 100 kgs of this fertilizer, so the amount of the amount of potassium that you're given to the plants is 38.6 kg, ठीक है. So that's the amount or the percentage of potassium that's present in this fertilizer. You might be asked about the percentage of N. So it's going to be the same thing, mass of N, which is 14, divided by the total mass, which we have already calculated, that's 101. और उसको फिर multiply कर दो 100 से. तो इसका जल्दी से बताओ, what do you get for this? ठीक है, so you're getting 13.8%. ठीक है, simple questions. You'll be asked about what's the percentage of a particular element in a compound. And remember, question mostly NP and K के ऊपर होगा, ठीक है. They're called NPK fertilizers. Remember what NPK fertilizers are. They're salts and they have to be very soluble, ठीक है.
But there are other salts which also have phosphorus in them, like calcium phosphate, but you can't use it as a fertilizer because it's not soluble. क्योंकि phosphates के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि they're mostly not soluble. Group 1 वाले salts are soluble, NH4 plus 1 salts are soluble, but these are not soluble. अच्छा, moving on about fertilizers, ठीक है? ये सारों को clear है? सनी business clear है? बाकियों को clear है सारों को? आप लोगों को Yes, clear? sir. अच्छा, इसके बाद ये कि there's some problems associated with fertilizers, ठीक है? And there's a word that's used for that. Associated with NPK fertilizers. So the problem is, okay, firstly, they are very soluble. And that itself is a problem because if it's very soluble, तो जब बारिश होगी, when it rains, a lot of it gets washed away, ठीक है? So plants are not actually going to get a lot of those fertilizers, ठीक है? वो जब आप पानी दोगे, बारिश होगी, they'll get washed away. So fertilizers are soluble. And get washed away when it rains or during irrigation. Even groundwater जो है ना, that is कि even if it seeps into the ground, so most of the fertilizer will get dissolved in the water and it will enter the groundwater as well. So fertilizer is soluble and get washed away when it rains or during irrigation. It ends up in water bodies, lakes and rivers. So eventually downstream ना, most of the fertilizers जो आप ground पे फेंक रहे हो ना, they will get washed away into rivers and lakes, ठीक है, जहाँ पे भी water bodies होंगी. Plants will in fact absorb very little of the fertilizer, ठीक है. Whenever it rains, they get washed away. तो in those lakes and rivers, वो क्या करेंगे कि they'll promote algae growth, ठीक है. जितने भी वो algae is something that grows very rapidly, खासतौर पे जब पानी के अंदर फर्टिलाइजर होगा, that's the green substance जो आपको नजर आता है, ठीक है. So algae grows and multiplies rapidly. And when it grows, it blocks sunlight. तो आपका जो लेक होगा ना, that will be covered by this green substance, ठीक है, and no sunlight. but उसकी I can show you an image as well, ठीक है, for eutrophication, ठीक है. So eutrophication is something like this कि this is ये जिसना बल्कि कोई भी इमेज खोल जाए, okay, you'll get the idea, ठीक है. So it's the green substance, वो slimy green substance that starts covering the upper layer of the water, ठीक है. So it multiplies rapidly and it eventually ends up blocking most of the sunlight. And when the sunlight gets blocked, the one thing that happens is that water plants, they start to die. So marine plants, because of absence of sunlight, and because of that, bacteria starts to multiply. क्योंकि there's a lot of dead plants, ठीक है. और algae की भी life cycle जो है ना, that's very short. मतलब algae जो है ना, वो बड़ी तेजी से grow करता है and it dies very quickly. So there's a lot of dead plants in the water. So bacteria grows and multiplies. As it feeds on dead plants,
and dead algae. And when bacteria starts multiplying, so there's a lot of bacteria in the water becomes really putrid, okay? It becomes really harmful. Bacteria consumes all the oxygen. Bacteria consumes all the oxygen. And when oxygen is finished in the water, the marine animals, fish, vagara, they all start dying. So without oxygen, it becomes unlivable for fish. Okay? Fish, they start to die. So ये पूरा process है, ठीक है? That is कि they're very soluble, get washed away into rivers and lakes. ठीक है? Even आपकी जो water supply है ना, the drinking water that you drink, that has a lot of fertilizer in it. ठीक है? वो कहीं पे भी tap खुला हो ना, तो उधर वो green substance जो है ना, वो grow करना शुरू कर देता है, because it has a lot of fertilizer. और algae जब भी grow करता है तो water जो है, sunlight cannot enter the water, marine plants cannot live, or bacteria starts to multiply because it starts feeding on the dead plants, and it consumes all the oxygen. Eventually there is no oxygen, okay, and the fish would start to die. ठीक है, सुभान ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट इज के ये सारी यूट्रिफिकेशन फर्टिलाइजर वाला पार्ट खत्म हो गया. नेक्स्ट इज अ थिंग कॉल्ड एसिड रेन. उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज एसिड रेन. अच्छा, एसिड रेन है कि द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज कि हमने पढ़ा था कि मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक. ठीक है, दे आर बेसिक. उसका मतलब होता था कि जब ये ऑक्सीजन -2 होगा, OH -1 होगा, तो वो एसिड से ना H+1 एक्सेप्ट करता है. और वाटर बना देता था. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट वी डिड. कि मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, वी डिड स्टडी दैट. अच्छा, वी डिडंट स्टडी अबाउट नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स. तो उसका जो ऑपोजिट है ना, कि व्हेनेवर यू हैव अ नॉन मेटल ऑक्साइड, so they are mostly acidic. एग्जाम्पल ये कि अगर आपके पास है, इफ यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो दैट इज एसिडिक, क्योंकि वाटर के साथ उसको रिएक्ट करो ना तो एसिड बन जाता है. इट फॉर्म्स H2CO3. ठीक है, इट फॉर्म्स कार्बोनिक एसिड. तो ये आपके जितने भी एसिड्स हैं ना, वो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स वगैरह इनकी वजह से हैं. सल्फर के ऑक्साइड हैं, अगर सल्फर ट्राईऑक्साइड है तो उसको अगर इफ यू ऐड वाटर टू इट तो इट फॉर्म्स H2SO4. फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, उनको अगर पानी में मिक्स करो तो दे एंड अप फॉर्मिंग फॉस्फोरिक एसिड. मतलब ये बैलेंस नहीं है. 4 फॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स होंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे. अच्छा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, सेम थिंग. NO2 would also mix with water and it would form actually 2 acids, nitric acid and nitrous acid, जो कि HNO2 है. अच्छा, but the point is कि all these non-metal oxides, they're all acids. मतलब basically all you have to do is you have to add water and they would turn into an acid. Nitrogen oxide would be acidic, sulfur oxides would, yes. ये आपने लास्ट में क्या लिखा है? P4
P4O10, ये फॉस्फोरस का ऑक्साइड है। ओके। ठीक है, मतलब बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट ये याद रखें कि अभी हम बेसिक ऑक्साइड्स तो हम पढ़ते रहे हैं, ठीक है, कि मेटल ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स व बेसिक। नॉन मेटल ऑक्साइड्स उसके ऑपोजिट होते हैं, ऑल एसिडिक, कि उनको ना आप वाटर के साथ मिक्स करो तो वो सारे जितने भी एसिड्स पड़े ना वो सारे उसी तरह बनते हैं, कि कोई भी नॉन मेटल ऑक्साइड उठाओ उसको पानी में मिक्स करो, इट टर्न्स इनटू एन एसिड। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स रिमेंबर दे आर मोस्टली एसिडिक। ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक क्यों होती है? कोक के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो कोक के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है तो वो बेसिकली एसिड की फॉर्म में होता है, जो कि फॉरन रिलीज हो जाती है, बट दे आर मोस्टली एसिडिक। नाउ द क्वेश्चन इज, साइड पे हमें एक सेकेंड, अच्छा नाउ द थिंग इज कि इसका करना क्या है कि we know that non-metal oxides are acidic, ठीक है, so there's a thing called acid rain. Acid rain होती है कि there are two pollutants, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These are two gases which are responsible for acid rain. अच्छा, पहला इशू ये है कि ये दोनों gases आई कहाँ से हैं, मतलब where do the pollutants how are the pollutants formed? तो सल्फर से शुरू कर देते हैं कि इसकी जो सोर्स है ना, सल्फर इज कॉमनली फाउंड इन वॉल्केनोस, ठीक है, सल्फर होता है वहां पे बहुत ज्यादा, तो volcanic eruptions वगैरह, a lot of sulfur oxides are produced volcanoes में ना, there's a lot of sulfur, वो burn करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में, वो जो लावा होता है ना, it's burning up, ठीक है, sulfur burns up, ends up producing sulfur dioxide, ठीक है, मतलब sulfur is a chemical that is a yellow colored substance. ये पता नहीं आज नेट स्लो ही बहुत होगा। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? अच्छा, नहीं अब आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। अच्छा, ये सल्फर का ना ये येलो कलर का सब्सटेंस, यू मस्ट नो इट्स येलो इन कलर। तो अच्छा अच्छा, बोर्ड आ गया। अच्छा, वॉल्केनिक इरप्शंस में ना बहुत सारा सल्फर होता है, वो जो मोल्टन लावा होता है ना उसके अंदर इट हैज अ लॉट ऑफ सल्फर, सल्फर और ऑक्सीजन जो है ना, वो ऑक्सीजन तो एयर में होती है, वो दोनों बर्न करते हैं, दे टर्न इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये जो वॉल्केनिक ऐश वगैरह होती है ना, दैट हैज अ लॉट ऑफ वॉल्केनिक ऐश वगैरह, इट हैज अ लॉट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन इट, ठीक है। बल्कि हिस्ट्री के अंदर बहुत दफा हुआ है कि क्लाइमेट चेंज ही ना इसी की वजह से हुआ है कि कोई मैसिव वॉल्केनो ना इरप्ट हुआ, उससे इतने इतने ऐश क्लाउड्स प्रोड्यूस हुए कि इवन जो अर्थ की जो एटमोसफेयर का टेम्परेचर है सनलाइट अर्थ तक नहीं पहुंच रही थी, तो पूरी पूरी आइस एज ना वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ना मतलब स्टार्ट हुई हैं, कि वो सनलाइट ही ब्लॉक हो जाती थी उनसे। तो मतलब इवेंट्स हुए हैं बीच में इस तरह के, वॉल्केनिक ऐश एक्सेट्रा, दैट हैज लेड टू क्लाइमेट चेंज। अच्छा, anyway, so you've got a lot of sulfur dioxide that's being emitted by these volcanoes. Uh, Plus, there's another thing जहाँ से sulfur produce हो रहा है, and that is burning of fossil fuels. तो एक तो ये one हो गया, number two is आपके जो fossil fuels हैं, खास तौर पे raw fossil fuels, ठीक है, burning fossil fuels, स्पेशली मतलब जो रिफाइंड फ्यूल्स है ना, गैसोलीन हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, इनको तो ये तो बहुत रिफाइंड है, इनके अंदर से आप इस तरह की चीज़ें रिमूव कर लेते हैं। लेके एग्जाम्पल कोल की है, ठीक है, कोल इज़ वेरी अनरिफाइंड, तो कोल के अंदर ना ये सल्फर होता है, और वो जब आप कोल को आग लगाते हो ना, सल्फर ऑल्सो बर्न्स अप एंड प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है।
So that is where you get sulfur dioxide. And similarly, where do you get nitrogen oxides? Now the thing with nitrogen oxides is कि firstly इसके जो दोनों elements है ना, नाइट्रोजन जो है ना वो 78% ऑफ द एयर है. तो मतलब आपकी इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन वैसे ही एग्जिस्ट कर रहा है. एंड ऑक्सीजन इज 21% ऑफ द एटमोस्फेयर. तो अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स फॉर्म करने आपने सिंपली क्या करना है, यू हैव टू रिएक्ट देम टुगेदर. तो आपके इर्द गिर्द ना, ठीक है, एवरीवेयर अराउंड यू, ठीक है, इन योर रूम एक्सेट्रा, एवरीवेयर देयर इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ऑल दैट नीड्स टू हैपन इज, हमजा एटॉमिक मास जो है वो मतलब उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है ना, दैट्स द एटॉमिक मास. दो वैल्यूज होती हैं, एक छोटी होती है एक बड़ी होती है. जो बड़ी वैल्यू होगी दैट्स द एटॉमिक मास. ठीक है, पोजीशन पे ना जाओ, पोजीशन डिफरेंट पीरियोडिक टेबल में उसकी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं. अच्छा, सो दिस वन, सो ऑल दैट नीड्स टू हैपन इज कि आपके जो इर्द गिर्द नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है, दे नीड टू रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म NO2. बट द गुड थिंग इज दे डोंट यूजली रिएक्ट. उसकी रीजन ये कि N2 के अंदर ना देयर इज अ ट्रिपल बॉन्ड. N इज इन ग्रुप 5, इट मेक्स अ ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, so N2 has a very strong bond. अब उससे होगा ये कि जब वो टूटेगा ही नहीं तो रिएक्शन किस तरह होगा. ठीक है, मतलब वो O2 के साथ जाके किस तरह रिएक्ट करे, या फिर वो कोई नई चीज किस तरह फॉर्म करे अगर वो पुराना बॉन्ड टूट ही नहीं रहा. ठीक है, so it's got a very strong triple bond. Large amounts of energy are needed to break it. So if it's not going to break, the reaction cannot happen. It can't form new bonds. अगर पुराना bond, old bonds are not broken, so you can't form new bonds. इससे बेहतर तो अपना ही नेट ऑन कर लेते ये. चलो जस्ट 1 सेकंड, सॉरी, फिर से शेयर करता हूँ. So can you all hear me? Hello. Yes, sir. Yes. अच्छा, बस इसके ऊपर थे हम कि इसका जो बॉन्ड है ना, that's really strong. तो most of the time it is almost or very difficult to actually break this N2 bond. ठीक है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. So if it's not going to break, तो वो रिएक्शन जो है ना वो आगे जाके होगा नहीं. ठीक है, so there's not going to be any reaction. तो एयर में ना नाइट्रोजन doesn't really do anything. Nitrogen is inert. मतलब आपके इर्द गिर्द जितनी भी, you're constantly breathing in nitrogen. ठीक है, most of the air that you breathe in, that is nitrogen. लेकिन it's not involved in any reaction. ठीक है, वो कुछ भी नहीं कर रही होती. But it can only react कि large amounts of energy are needed to break this. So the nitrogen will react with oxygen अगर large amounts of energy available हो. So this does happen कि air heat up होती है. Air heats up in car engines. आपकी गाड़ियां constantly run हो रही होती हैं. ठीक है, तो उसके अंदर engine के अंदर ना, engines have a very high temperature. तो air heats up because of car engines. And during lightning strikes. या कहीं पे भी ना अगर वो
हीट प्रोड्यूस हो रही है, किसी फर्नेस है या जो भी ना. कार इंजन ये है कि कार इंजन इज कॉमन, it's there's a lot of car engines everywhere, ठीक. So there's a constant combustion that's happening, air is heating up. So air heats up because of car engines, and during lightning strikes, उसके अंदर भी ना air heat up कर जाती है. The N triple bond N breaks because of that. And it eventually reacts with O2 to produce nitrogen oxides. तो आपका NO2 ना इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि नॉर्मली रिएक्शन नहीं होता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे डोंट रिएक्ट, लेकिन बिकॉज योर हीट देयर लॉट्स ऑफ प्लेसेस वेयर एयर इज हीटिंग अप, स्पेशली कार इंजन्स के अंदर, तो द नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन व्हिच वाज वेरी हार्ड टू एक्चुअली ब्रेक इज गोइंग टू ब्रेक जब आप उस. हाँ, मतलब लाइटनिंग स्ट्राइक्स एक रीजन है जिसकी वजह से ये NO2 प्रोड्यूस होता है ना. हाँ, अभी हम ऐसे नहीं पहुंचे, अभी तो हम उस बात पे पहुंचे कि NO2 प्रोड्यूस हुआ है. अभी तो हम उस पे पहुंचे ना. लिसन, अभी तो हम NO2 तक पहुंचे ना कि NO2 प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है. वो देखा था कि सल्फर डाइऑक्साइड किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है और NO2 किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. एंड रिजल्ट है कि जब फिर उसके बाद ये दोनों गैसेस प्रोड्यूस हो गई हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन, या फिर आप वो जो कोल को बर्न कर रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है. और एयर को अगर आप हीट अप कर रहे हो ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे वुड एंड अप रिएक्टिंग विद ईच अदर, बट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हीट, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ना, ये टूटेगा नहीं उसके बगैर. सो द थिंग इज के once these gases are produced, both of these gases, the first reaction is NO2 and SO2, they react with each other. और उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर they have this reaction where NO is produced and SO3 is produced. So NO2 gives away one of the oxygens to SO2, और वो NO जो है ना वो एयर में दोबारा से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इट वुड फॉर्म NO2. अच्छा, इस प्रोसेस को कहते हैं कि इस प्रोसेस के लिए जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज कि NO2 ऑक्सीडाइजेस SO2. अच्छा, अभी we haven't studied oxidation, but simply oxidation simply means when something gains oxygen. So sulfur dioxide ended up becoming sulfur trioxide. So it ended up gaining oxygen. So that is oxidation that's happening. ठीक है? Whenever oxygen is gained, so gain of oxygen is known as oxidation. या oxidizes SO2. और NO बाद में ना एयर से वैसे ही ऑक्सीजन गेन करके वापस NO2 बन जाता है. अच्छा, anyways, you've got these two compounds. फिर ये होता है कि रेन जब होती है ना, बारिश होती है, और उसके अंदर you've got SO3 and you've got NO2. The rain turns into acid rain. क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि SO3 में अगर वाटर ऐड करो तो कौन सा एसिड बनता है, मतलब कौन सा होगा, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है. अच्छा, सिमिलरली हमने पढ़ा था कि NO2 के अंदर इफ यू ऐड वाटर टू इट तो नाइट्रिक एसिड and nitrous acid both are produced. नहीं, सेकंड पार्ट है कि पहले तो फर्स्ट पार्ट के NO2 SO2 अभी हमने पीछे पढ़ा है कि दे आर प्रोड्यूस, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, ये वो कार इंजन्स और लाइटनिंग स्ट्राइक्स की वजह से ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं. The NO2 oxidizes SO2, इसका मतलब है कि NO2 इसको ऑक्सीजन दे देता है, ठीक है.
सो इट टर्न्स इनटू SO3. ये जो अगला पार्ट है ना वो ये कि NO एयर के अंदर है ना, एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, सो NO ends up gaining the oxygen again back again and forms NO2 back again. ठीक है हमजा, इज दिस क्लियर? तो आपके पास NO2 और SO3 दोनों होते हैं, और ये दोनों ना रेन के साथ मिक्स होते हैं, एंड व्हेन दे मिक्स विद रेन दे फॉर्म एसिड्स. Gotcha. So you've got SO3 that's turning reacting with water to form H2SO4. You've got NO2 that's reacting with water to form HNO3 and HNO2. So acids are produced, यानी not the whole rain would be acidic, लेकिन उसके अंदर जो भी वाटर का मॉलिक्यूल इसके साथ रिएक्ट करेगा ना, that would turn into an acid. तो ये आपके पास ना एसिड रेन है. और एसिड रेन का जो हार्मफुल इफेक्ट है ना, वो ये कि एक तो वो एसिड रेन है, तो एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, तो इट करोड्स मेटल, जितनी भी मेटल की चीजें होंगी, मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2 बनाता है. ठीक है, तो मेटल स्ट्रक्चर्स जैसा ब्रिजेस वगैरह, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है. लाइमस्टोन बिल्डिंग्स, लाइमस्टोन जो होता है ना, ये मार्बल वगैरह, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, या इट हैज कैल्शियम कार्बोनेट इन इट. कार्बोनेट प्लस एसिड क्या होता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड होता है. तो इट करोड्स मेटल स्ट्रक्चर्स, लाइमस्टोन बिल्डिंग्स, मार्बल वगैरह की जितनी भी होंगी, जैसा ताजमहल वगैरह ना. ठीक है, मतलब इसके साथ मैं लिख भी देता हूँ कि हमने ये रिएक्शंस किए हुए हैं. मेटल प्लस एसिड क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस, तो मेटल रिएक्ट कर जाएगा, इट वुड फॉर्म अ सॉल्ट प्लस H2 गैस. और कार्बोनेट्स का भी हमने रिएक्शन किया हुआ है कि कार्बोनेट प्लस एसिड क्या होता है? इट फॉर्म्स salt and water and carbon dioxide. अच्छा, ये तो पहला हार्मफुल इफेक्ट है. फिर और हार्मफुल इफेक्ट्स ये हैं कि एनवायरनमेंट के लिए, कि सॉइल बिकम्स एसिडिक, lakes become acidic, water bodies become acidic. और ये हमने डिस्कस किया था कि pH चेंज नहीं होना चाहिए. तो इफ द सॉइल बिकम्स एसिडिक, प्लांट्स विल नॉट लाइक इट. ठीक है, कि वो जो H+1 और OH आयंस का जो बैलेंस है ना, क्योंकि वाटर इज एवरीवेयर, दैट शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड. तो प्लांट्स विल स्टार्ट टू डाई. ठीक है, योर प्लांट्स एंड योर फिश, they're going to die. और ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो इफेक्ट है वो ये कि स्किन एंड आई इरिटेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स एसिड रेन. ऑल्दो वो डाइल्यूट होगी, मतलब नॉट एवरी वाटर मॉलिक्यूल वुड टर्न इनटू एसिड रेन. ठीक है, मतलब अगर ऊपर से 100 पानी के मॉलिक्यूल्स गिर रहे हैं ना, तो उनमें से 2-3 वुड रिएक्ट विद SO3 और NO2 टू फॉर्म एसिड रेन. ठीक है, मतलब बाकी 97 जो होंगे वो, अगर तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड रेन होती फिर तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते. सो इट्स जस्ट अ वेरी डाइल्यूट एसिड रेन. ठीक है, तो इट कॉजेज स्किन एंड आई इरिटेशन एंड एलर्जीज. तो ये सारे ना हार्मफुल इफेक्ट है. सो यू हैव टू बी केयरफुल कि एनवायरनमेंट में कौन सा इफेक्ट है, बिल्डिंग्स पे कौन सा इफेक्ट है, और ह्यूमन हेल्थ पे ना क्या इफेक्ट्स हैं इसके एसिड रेन के. तो जस्ट रिमेंबर द होल प्रोसेस के हाउ इज एसिड रेन फॉर्म्ड, व्हाट आर द सोर्सेज. एक हमने यूट्रिफिकेशन किया है, कि यूट्रिफिकेशन फर्टिलाइजर्स वगैरह का क्या प्रोसेस है. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? Yes, sir. चले ठीक है, हमजा मैं मैसेज करता हूँ इसके बारे में. ठीक है, ओके एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज. Love is